Order, order. Welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we discuss what made news, what didn't, and what absolutely shouldn't have. Today we have with us our in-house sharp, brilliant reporters, Anmol, Pritam, and Pratyush. Hi Anmol, hi Pratyush. Hi. And how are you guys doing this week? We are working on some stories, so yeah. Incidentally, it's very interesting how the theme of both your reports this week is love jihad. So Pratyush, do you want to start and maybe give us a bit of a background on the report that you did? So my story was from Assam. So there was one incident of the murder of a BJP leader on June 11. So I tracked that story. Initially, it was a murder. Then there were some rumors of rape and torture. But later, I think a day or 2 days later, one of the magazines run by the RSS organizer, they turned it into a love jihad. And I was here, so I was not in Assam. So when I saw the report, I checked it, like, what does the local media say? So I found it nobody in the local media is saying it is a love jihad. There were there was a police briefing. Even in the police press conference, they didn't mention about love jihad. So that's how I did the story. I tried to find out what is the truth behind it. I spoke to the victim's family. I spoke to police. Then I did the story. And like I said, incidentally, Anmol, आपकी story भी कुछ इसी line पर है. Would you like to tell us about it? Basically, मेरी story जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है. एक छोटा सा टाउन है 18-20 हज़ार आबादी का, पुरोला. वहाँ पे ऐसे ही एक लव जिहाद का फेक केस मैन्युफैक्चर किया गया और उसको बेस बनाकर जो वहाँ पर फार राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वहाँ के बीएचपी के लोग थे, बीजेपी के लोकल लीडर्स थे या फिर जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन थे, इन सब ने और जर्नलिस्ट वहाँ के कुछ लोकल मिलकर इन लोगों ने एक फेक लव जिहाद का नैरेटिव गढ़ा. और फिर उसके ज़रिए क्या हुआ कि उस टाउन में जितनी मुस्लिम फैमिलीज़ थी, करीब 40-45 के करीब थी, तो उनमें से 40 के करीब मतलब 2-3 या 1-2 बची होंगी, बाकी सबको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ गया. और सब वहाँ वेल सेटल्ड थे, अच्छी दुकानें थी लोगों की, किसी ने बहुत बढ़िया घर बना रखा था, तो उन सबको वो पूरा शहर छोड़ कर जाना पड़ा, सब कुछ अपना. और एक पूरे टाउन से, एक पूरी कम्युनिटी का वहाँ से मतलब हटा ही दिया सबको, इस टाइप से था. एंड व्हाट लेड यू टू द स्टोरी? आपको पता कैसे चला कि ये वहाँ पर एक स्टोरी है दैट अ जर्नलिस्ट मेड अ फेक sort of narrative around it? How did you find out this information? ये इन्फॉर्मेशन तो वहाँ ग्राउंड पे जाके ही मिली. मतलब पहले तो बेसिकली यहाँ से तो हम लोग यही गए कि क्या हो रहा है एक्चुअली. जाके पहले तो फर्स्ट वीडियो रिपोर्ट यही थी कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को बताएं कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या उसके पीछे का बेस क्या था, कैसे सब हुआ. फिर दूसरी वीडियो स्टोरी थी कि अब 15 को हो गया तो क्या बचा है क्या नहीं बचा है, और यहाँ के जो हिंदुत्व ग्रुप हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सब जा चुके थे. तीसरा जो था, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था जिसमें पूरा नैरेटिव बस्ट हुआ, वो पूरा नैरेटिव बस्ट करने के लिए वहाँ के बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कहीं भी शहर में जाते हैं तो लोकल इनपुट्स होते हैं और उन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके उसे 5 दिन लगे उसको डिकोड करने में. बट आई फाइनली मतलब फाउंड दैट कि ये पूरा नैरेटिव कैसे बना और वो पूरी स्टोरी है. और ये कितना इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब आप बोल रहे हैं कि आपका थोड़ा थोड़ा करके नेटवर्क बना, मैं ये सोच रही हूँ कि आपने मतलब मेजर्स डिड यू टेक कि आप अपने सोर्सेज का ट्रस्ट गेन कर सकें और उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकें? मेजर्स तो बेसिकली ये होता है कि जब भी हम जाते हैं कहीं तो उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, उनकी बात समझना, फिर उनको बताना कि हम यहाँ किस रीजन से आए हैं. और मतलब मोस्टली लोग जो होते हैं तो बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि इनको लगता है कि हाँ सच बाहर आना चाहिए और वो भी चाहते हैं कि सच बाहर आए. और उन लोगों तक पहुंचना और फिर धीरे धीरे एंगल ढूंढना. वहाँ की लोकल वेबसाइट्स, लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, या जिस दिन से इंसिडेंट शुरू हुआ उस दिन से पूरा 15 तक का न्यूज़पेपर मंगा के पढ़ना, एक एक खबर से उससे रिलेटेड गुजरना कि कब क्या क्या हुआ ताकि कोई कड़ी जुड़े. तो वो काफ़ी मतलब 5-6 दिन का वो पार्ट था. अपार्ट फ्रॉम वीडियो स्टोरी के बाद, हर शाम वीडियो देने के बाद 3-4-5 घंटे सुबह का शाम का उसको पूरा देखते थे. तो आपने, जैसे आप बोल रहे हैं, आपने पहले 2 वीडियो स्टोरीज की और फिर एक लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन टेक्स्ट स्टोरी. ये पूरा
कितनी देर आपने स्पेंड की इन उत्तरकाशी, एंड बिकॉज देयर सो मच न्यूज़ दैट वी आर सीइंग ऑनलाइन, क्या आप ग्राउंड पे आपने क्या देखा और टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? आर देयर एनी स्पेसिफिक बिग मेजर डिफरेंसेस? बहुत ज़्यादा। जैसे कि टीवी के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो लाइव करते हैं, हमेशा कुछ हो रहा है तो उसको लाइव करेंगे, और लाइव करने के साथ साथ एक जो टीवी का पूरा नैरेटिव सेट था कि इसको जस्टिफाई करना है कैसे भी, जो कुछ भी हुआ है पुरोला में, और उसको जस्टिफाई करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि बोल दो ये लव जिहाद हुआ था और एक कम्युनिटी को ब्लेम कर दो कि ये लोग यही करते हैं, और उसको एक बड़ा बताओ कि ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, इस तरह की बातचीत करना। और यहाँ से प्राइम टाइम में डिबेट चल रहा है, यहाँ के एंकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड पे रिपोर्टर गया हुआ है टीवी का, वो भी इसी माइंडसेट से गया है। एक होता है कि आप फीड करते हैं किसी के मुंह में वर्ड कि तुम वो बोलो जो हम चाहते हैं, तो मोस्टली फीड ही कर रहे थे कि वो ऐसे लोगों से ही बात करते थे जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ दें, जो ये बोले कि हाँ ये सही हुआ, ये लोग ऐसे करते हैं। और दूसरी बात, इसमें सेंटीमेंट का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप फैमिली की बात करते हो, कोई भी कहेगा कि हमारे बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके इज्जत के साथ खेलते हैं, हमारे लिए लोग खतरा है, तो आपको भी लगेगा कि अगर किसी की इस तरह कोई कर रहा है तो ये गलत है। और उस सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके इन लोगों ने पूरा एक पूरी एक कम्युनिटी को वहाँ से हटा ही दिया। तो इनका पूरा टारगेट ही यही था, चाहे वो ऑफिसर से बात करना है, हर किसी से लव जिहाद पे बात करना। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि क्या ये सच में लव जिहाद है। डे वन से इन्वेस्टिगेशन ना होने से पहले भी अगर कोई क्लियर करना चाहे तो लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है, जो ये लोग देते हैं कि किसी को प्यार में फंसाना, फिर उसको कन्वर्ट करना। अब ये जो केस फर्स्ट केस ही रजिस्टर हुआ, तो उसमें अगर पहले दिन से हम लोग माने तो केस क्या था कि अपहरण का केस था, कि अपहरण करने की कोशिश हुई। अपहरण करने की कोशिश लव जिहाद नहीं है, डे वन से क्लियर था, लेकिन उसके बावजूद इसको लव जिहाद किया जा रहा है। और वो पूरा कोई जा नहीं रहा है कि बेस पे जाए और उसको समझे, सब उसी को लेके बस जस्टिफाई करने पे लगे थे। तो टीवी की रिपोर्टिंग जिसने भी देखी होगी, न्यूसेंस में भी आया, टिप्पणी में भी आएगा कि कैसे टीवी ने इस पूरे मामले को कवर किया। न्यूसेंस देखना चाहिए कि कैसे टीवी ने सब जस्टिफाई किया। बहुत अच्छा प्लग कर दिया हमारे बाकी सारी स्टोरीज़ के लिए। बट बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव एक स्टोरी है, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो 40 मुस्लिम फैमिलीज़ को माइग्रेट करना पड़ा उस टाउन से, क्या आपकी कॉन्वर्सेशन हुई थी उन फैमिलीज़ में से किसी से? बात हुई, वो लोग वीडियो पे कंफर्टेबल नहीं थे, नहीं तो वीडियो रिपोर्ट आई होती है हमारी, बिकॉज उन्हें अभी भी लगता है क्योंकि वहाँ पे उनका घर है, दुकानें हैं, और वो लोग अगर वीडियो पे कुछ बोलें तो कल को अगर वो वापस जाना चाहें तो उन्हें टारगेट ना किया जाए, या उस वीडियो को बेस बनाकर फर्दर कोई कम्युनल टेंशन ना क्रिएट किया जाए। और उनको तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी कुछ लोग 50-50 60-60 साल से रह रहे हैं, तो उनको इस बात की भी टेंशन थी। तो वो ऐसे कुछ एक्सट्रीम व्यू नहीं दे रहे थे, पर वो लोग ये ज़रूर बोल रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है। और अब सुनेगा कौन? अब टीवी इतनी देर तक चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है कि हाँ भाई गलत हुआ है। एक आदमी है जो आरोपी है, जो एक्यूज्ड है, उसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को हटा रहे हैं। और सीएम जाके इंसिडेंट के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही सीएम क्या करते हैं कि उसी ज़िले में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट उस सिटी में नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बगल की सिटी में जाते हैं, और सीएम खुद ये स्टेटमेंट देते हैं कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं चलेगा। तो जहाँ सीएम जाके ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, तो या फिर हो, लेकिन इस कोइंसिडेंट भी हो तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो तो मेजर होगा जी। और वो हुआ भी। आप ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जो आपके सोर्सेज हैं उनको अपनी सेफ्टी की बहुत चिंता है, विच इज़ वाई दे डिडंट वांट टू कम ऑन वीडियो। पर जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, आपने वीडियो की है और आपने इतना टाइम भी स्पेंड किया है, क्योंकि वो एक दिन की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी कि आप चले गए उत्तरकाशी, एक दिन की रिपोर्ट की और वापस आ गए। यू वर देयर फॉर अ लॉन्ग चंक ऑफ टाइम। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इन सिचुएशंस में आपने अपनी सेफ्टी और अब, क्योंकि पोटेंशियल थ्रेट्स तो आपको भी होंगे, बिकॉज एक आपने स्टोरी कर दी, फिर आप दूसरी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सो पीपल नो हु यू आर। सो व्हाट वर सम मेजर्स दैट मे बी यू टुक अपनी सेफ्टी के लिए? 6.5 दिन मैं था वहाँ पे, और छोटा सा टाउन है, एक मेन सड़क है, उसी से बार बार दिन में 20 बार गुजर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो बाई फेस बाई नेम वहाँ के लोग जानने लगे थे सब।
तो थ्रेट तो था ही कि मतलब कुछ हो सकता है, क्योंकि लोकल लीडर्स हैं। और हमारी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो हमने उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस किए हैं उनसे, जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उनसे, उनको काफ़ी अनकम्फर्टेबल किया है। लेकिन उसके बावजूद स्टोरी तो ज़रूरी थी। तो सेफ्टी का ये था कि ठीक है, बातचीत तो लोगों से करेंगे ही, तो करते थे, बाकी छोड़ दिया था पुलिस पे और वहाँ के लोगों पे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन स्टोरी करेंगे। It is very daring, but this and very good job at that, Anmol. Some very important reports have come out of your investigation there. But I do want to come to you, Pratyush, because you also did something very similar. And it is, like you said, coincident हो भी सकता है, coincident नहीं भी हो सकता है कि across India, love jihad has become such a major topic around large media narrative. So I do want to understand, can you sort of walk us through your initial reactions upon hearing about the murder of the BJP leader, and also how did you approach that story initially? So basically, I came to know about this incident on first day itself, on June 11. So initially, it was a murder of a BJP leader. Then there were some suspicion that it may be rape and a torture. So I was following it as a usual news. Ki, okay, what is happening? Let me check, because I am in Delhi. How can I go there to check the facts? No. So basically, I was following it. I was basically following local media, not any national media. It was covered by Hindustan Times and other national media as well, but I was following local media. So first I saw the social media reactions were very kind of very unusual. Somebody is claiming it is a rape, then somebody is claiming it was a torture, and a lot of narratives were out there on the social media. Then suddenly I saw a tweet from DGP, so Assam Police DGP's tweet, who tweeted saying that we should not say anything without any evidence about a rape victim, even if it is rape or something. So that gave me a sense that there may not be any evidence of rape or something. Then I started calling people out there, what is happening. Then they gave me some inputs, some people are spreading rumors it is a rape. Then I had an idea, okay, this may go further, and somebody is trying to give it a narrative, since he is a BJP leader and the accused was a Muslim. So that give anyway that that is easy for anyone to give a right-wing narrative of any kind of narrative, maybe love jihad or any other. So that's how I started to follow the news for 2-3 days. Then this organizer report came, which proved our fears true. Okay, they have given it a love jihad narrative, and it started not from Assam but from Delhi. So so then when I saw the love jihad, I tried to speak to local journalists. Is it a love jihad case? They said no. Police didn't say it to us. I'm saying, are you guys showing it as a love jihad? They said no. Actually, what happened in the first press conference, I think one day after the incident, police addressed the media and said it is a love affair between these two guys, accused and the victim. So from there also it makes it become very blurred what kind of love affair was it, and and many are questioning the character of the woman as well. So it become very messy by that time when the police addressed the first press conference. So when I saw the organizer report, I was speaking to the local journalist. Then Pratyush, before can you explain to our listeners the organizer report? What is this report? So basically, they did reporting of the incident with a headline with love jihad, and the starting with another love jihad case from Assam. So they have nothing in there. I read the story. There is no quote saying somebody, or even from the victim's family, even from the police, it is a love jihad. But they put it on their own in the headline and in the lead. So that's what they need, no? They just give it a narrative. Okay, this is a love jihad case, but they don't say you from where they get this information. So when this press conference happened and this article came up next day, then I called the journalist, and I think after 2-3 hours I got an FIR of the victim's family. So in this case, the husband of the victim filed an FIR against police for the press conference. Basically, press conference was addressed, I think, after 24 hours or 12 hours of the incident, and the husband alleged that they are doing it very fast. How could they get so many information there is a love affair or something like that within 24 hours? And the victim's husband told me, I called him over phone, so he told me, see, they haven't even recovered the bags she was carrying. They haven't recovered the mobile phone she was carrying. So how could they say this much things? And then he said they are saying it from the confession of the accused. And once you put out such a statement from the police,
and it maligns the whole family. It's like, you know, he was saying ki, like, I'm very ashamed. I cannot believe this. And he has 2 daughters. You know, they are all adult. So that has a repercussion on the daughters as well. They are studying in different colleges and schools. So of course, you know, when this kind of things spread out, and then it becomes very kind of awkward for them as well as like the family. And you know, correct me if I'm wrong, but there has been no, like you said, it's been 24 hours. The police gave a statement that there was a quote-unquote love affair between the accused and the victim. And it is so, I mean, this definitely has a lot of misogynistic underpinning, that if it's a woman from a different religion, you know, it obviously has to be love jihad or love affairs. And you're taking away the sort of, dignity. You know, I mean, the dignity, but you're taking the burden of the assault from this leader and putting it on the victim who's already suffering. And it's very, you know, it is very scary. And I can imagine you did this story from Delhi, and this must have had so many challenges, because how do you be in Delhi and report and find something like this there? So could you tell me if there were any challenges at all? Yeah, there was challenges like finding the FIR to speak to the victim's family. But because what happens, you know, once such incidents happen, when this kind of a social atmosphere, you know, creates, then the victim's family gets very conscious. They're not very easy to speak to you. And thankfully, I can speak Assamese. So I could connect to them. You know, even though I'm calling from Delhi, I was like normal. I'm calling from Delhi, but I am in Assamese. Like, you know, I started speaking to him in Assamese, which is the language he knows. He can't even speak properly. I don't think he can speak properly Hindi. So even the FIR was in Assamese. So that helped me a lot while like tracking the case and reporting it. So that helped me. And other challenges is from basically like police. They don't say you things clearly. When I call them and ask, so what is the, you know, what is the update? They said, we said whatever we have to say in the press conference. Then I said, you know, was there any love jihad angle? I think it is there in the story. They said, you know, I don't know the definition, so I'm not the competent authority. He could have said easily, it is not a love jihad. Even in Anmol's story, I think police have told you clearly, no, it is not love jihad. You quoted one police officer. So in that case, like, police officials are also very conscious, should we say this? Because the report was published in Organizer. It is not a very ordinary publication. It is run by RSS. They know it. They know it very well. So it may have some repercussion. I don't know. But their response was very, you know, kind of... Oh. That brings me to, how did you manage to get comments from the organizer? Especially, no, I didn't get any comment though. Okay. So I tried. I tried. I called him. I messaged him, the editor. So, but he's seen my messages, but he didn't respond to me. None at all. Nothing. Because I know they couldn't say anything on it. Thank you so much, Pratyush, for your comments. But this also brings us to the end of the video segment. We will continue our conversation with Anmol and Pratyush on our podcast. And you can go to newslaundry.com and click on the podcast link. The subscription model is something that keeps Newslaundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to Newslaundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.